suo motu publicly उसको disclose किया गया है जो उनके वेबसाइट पे किसी डिपार्टमेंट का, या फिर if somebody is asking question in the parliament to the concerned minister, फिर वो information बाहर आ रही है। When you are asking for that information, the department may give you, may not give, कोई compulsion as such, and this is something which is under department's control कि आप अपनी वेबसाइट पे रखना चाह रहे हैं, this is my discussion, ठीक है, and why would I put that information on the website जो कि मेरे को ट्रबल में डाले, isn't it? When it comes to the parliament failures asking question, हमें पता है कि कितने दिन पार्लियामेंट काम करती है, 55-56 दिन काम करती है, उसमें भी क्या काम करती है हम देखते हैं, और इट्स नॉट पॉसिबल, इतना आसानी है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहोगे कि जरा क्वेश्चन पूछ लेना और वो पूछ लें, and therefore RTI can be considered as a revolution because it gave a legal guarantee that if you are seeking an information under RTI, if you are seeking for any information, if government has maintained that, if the government has that particular information, and if it is not exempted, if it is not exempted under section 8 of RTI, then government will have to give you that information. It is a compulsion. It is a compulsion, and that also in a time bound manner. ये नहीं है कि ऐसा ठीक कल आ जाना परसों, time bound manner. And therefore this started the regime of RTI actors. कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे यदि गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन है या तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहे, अदरवाइज यदि इन्फॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी इन्फॉर्मेशन। ओपिनियन है, यदि आप यूपीएससी में आरटीआई डाल के ये पूछेंगे कि आपको क्या लगता है PSIR का पेपर इस बार टफ आया था, इजी आया था, तो ओपिनियन नहीं हुआ। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्वेश्चन डालेंगे क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट सही काम कर रही है बुरी काम कर रही है, दे विल नॉट गिव यू ओपिनियन। इनफैक्ट एक अपना स्टूडेंट है अर्पित, इस बार वो इंटरव्यू दे रहा है, उसने आरटीआई डाला था आस्किंग कि क्या यूपीएससी मेंस के लिए कोई मॉडल आंसर प्रोवाइड करती है इवैल्यूएटर्स को, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन था कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि इस मतलब जो मॉडल यदि या फिर कुछ तो उसने पूछा था कि रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन में यूपीएससी ने डिनाई कर दिया कि वो तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू मॉडल आंसर यूपीएससी से कि दे डोंट प्रोवाइड एनी मॉडल आंसर टू द इवैल्यूएटर फॉर इवैल्यूएटिंग द तो एक क्या वो एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मॉडल आंसर दिया जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, तो उसका रिप्लाई। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट आरटीआई इज पुटिंग गवर्नमेंट इनटू दिस कंपल्शन। और इससे पहले ये डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है उससे पहले ये भी कंपल्शन था कि एनी इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी गिवन टू द पार्लियामेंट कैनॉट बी cannot be kept secret from, आपको भी देना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को जाती है, पार्लियामेंट इज आल्सो फोरम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड इन द पार्लियामेंट विल हैव टू बी गिवन थ्रू आरटीआई। और इससे क्या होता है कि मैं बता दूं कि देयर एनजीओ इनकम अपना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो आरटीआई ही लगा तो हर एक इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलते हैं, कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो कि बहुत ट्रिवियल इंफॉर्मेशन होते हैं, बट नेवरदलेस इट शोज सम काइंड ऑफ लीक इन द सिस्टम। आई थिंक मैं एक डेढ़ साल पहले हिंदू में कहीं पे छोटा सा न्यूज छपा हुआ था, आई वाज रीडिंग कि रेलवे से पूछा गया था कि व्हाट रेलवे इज डूइंग, आप देखेंगे ना कि अभी तो वो पत्थर से रिप्लेस कर दिया, रेलवे स्टेशन पे कहीं रेलवे ट्रैक नीचे वो चूहे वो कर देते हैं, दे मेक होल रैट्स। हाँ, तो व्हाट आज व्हाट रेलवे डिपार्टमेंट हैज टेकन, रेलवे डिपार्टमेंट ने व्हाट्सएप किया, देखिए उस इंफॉर्मेशन से पता लगा कि इस पे जो एफर्ट दिया गया उससे पैसे खर्च हुए हैं वो 25 लाख खर्च हुए हैं, और चूहे पकड़े गए 4, ठीक है, 4 चूहे पकड़ने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने 25 लाख रुपए खर्च, चूहा हिसाब लगा लो कि कितना हो रहा है। एक बार ऐसे आगे लगा कि किसने कहा पता किया कि शायद नीति आयोग जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है उसमें वहाँ के 2 टॉयलेट्स को रिनोवेट कराने में 76 लाख रुपए लगाए गए थे, ठीक है। अब ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि बहुत करते हैं, बट थिंग कि अब जितने बड़े स्कैंडल्स हुए, कॉमनवेल्थ हो गया, टू स्पेक्ट्रम हो गया, आरटीआई हैज हेल्प पीपल रीच दैट पर्टिकुलर, ठीक है, आपको थोड़ा भी कहीं शक हो तुरंत आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है, एंड देन यू विल कम टू नो, एंड देन वंस इट इज बिफोर द कोर्ट, देन कोर्ट विल आस्क द पुलिस टू इंक्वायरी। नाउ सरप्राइजिंगली आरटीआई का जो यूज करने वाली जो मैक्सिमम जनता है, इनफैक्ट इफ यू सी द नंबर ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस इट्स इंसेप्शन, दिस शोज ट्रस्ट इन द आरटीआई, पीपल आर यूजिंग। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं ना, दे आर नॉट द एजुकेटेड वन, इसमें जो मैक्सिमम लोग जो यूज कर रहे हैं आरटीआई का, दे आर द पीपल फ्रॉम लोअर क्लास ओनली। मतलब देखिए लगता है ना कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आरटीआई यूज करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा आरटीआई यूज होता है वो लोअर क्लास लोग यूज करते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस जो यूज करते हैं, लोअर क्लास है, अपर क्लास में दोज हु आर रनिंग एनजीओज एंड एक्टिविस्ट होगा, बिकॉज अपर क्लास इन जनरल स्टेट के पास से डिपेंडेंसी नहीं है, वो क्यों आरटीआई लगाए। अब होता क्या, आमतौर पर कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, मे बी आप बैकवर्ड क्लासेस में आपका कोई स्कॉलरशिप आने वाला था, अभी तक नहीं आया, आप डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप जैसे बात किसी ने आपको बोला कि आरटीआई लगा, ठीक है, आपने खुद से आरटीआई लगा लिया, ठीक है, यू नो यहाँ पे लैपटॉप अपने इंटरनेट से लगा, मे बी अ फार्मर इज लुकिंग फॉर सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, ही हैज नॉट रिसीव्ड इट, अब वो वहाँ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियली सजेस्ट करेगा आरटीआई लगा दो, मिल जाएगा, और वो खुद से आरटीआई लगाएगा, बाहर साइबर कैफे वाला है तुरंत आरटीआई फाइल कर देगा, उसको इन्फॉर्मेशन आए। सो these people since they are dependent on government, they are using more and more RTI. But again it will be a problem for government, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपने लिए प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट ने भी 2005 में लाने के बाद सोचा कि क्या ही जरूरत है इसकी, क्यों हम लेके आए, because the kind of way in which people have been using that government का ये compulsion हो गया, and therefore government has taken some steps to weaken this particular thing. अब इसके जो challenges है, main RTI के जो challenges है that affects the freedom of speech and expression, there are certain structural challenges, there are certain implementation challenges. अब structural challenge में एक section 4 है, structural challenge होते हैं जो कि law से ही निकलते हैं। तो in RTI Act 2005 we have section 4. Now section 4 says that the government departments, section 4 is saying that government departments will make suo motu disclosure of the information, खुद से वो अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालें। Now it will help in both ways, that means if the information is already available on the website, then the number of RTI application will go down। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, if you go to the website of UPSC you will get the previous year question। यदि ये suo motu disclosure नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होता, आप RTI लगाते, kindly send us the PYQ of this lecture, तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे रहेगी उतना RTI एप्लीकेशन कम होंगे, उतना ज्यादा सिस्टम एफिशिएंट होगा। But again, government departments उन्हीं information को रखेंगे वेबसाइट पे जो कि which is showing the success not the failures of it. And although section 4 is saying that there will be suo motu disclosure, but there is no mechanism to ensure it. मतलब कोई पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि what information कोई ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया गया है, and if you are not doing this उसके लिए कोई punishment भी नहीं, and that's why we see that minimum information is being put on, and only those information which are positive in nature is being put on the website. सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है section 4 of RTI, section 8 of RTI. Section 8 is giving a list of exemptions.
एंड एग्जाम्पशंस जो है वो एक लेवल पे ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड है, बट गवर्नमेंट क्या करती है कि बाकी चीजों को भी वो इसके अंडर में कैटेगराइज करती है। अब एग्जाम्पशंस क्या है? दीज आर दोज इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट में हाइड फ्रॉम, मतलब उसको कंपल्सन दे वांट दे कैन गिव द इन्फॉर्मेशन, बट देयर इज नो कंपल्शन ऑन देम टू गिव द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू। अब इसमें है क्या दैट द लॉ सेज दैट देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन व्हिच अफेक्ट्स द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो 19 क्लोज टू। Then there is no obligation to share the information which has been expressly forbidden to be published by the court। जैसे आर्टिकल मेडिकल से रिलेटेड कोर्ट ने कहा कि तो कुछ केसेस होते हैं कोर्ट कहता है कि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं करेगा। इसका एग्जांपल हुआ द डिटेल्स ऑफ कोलिजियम डेलिब्रेशन, कि कोलिजियम का फाइनल डिसीजन आपको पता चलता है व्हाट इज द इंटरनल डेलिब्रेशन दैट इज नॉट गिवन आउट, एंड इफ somebody is giving that information then it will result into contempt of court, that person can be punished। Similarly, any information which will breach the privilege of the parliament by article 105 194, any information which is of commercial confidence, मतलब जो कि होते हैं आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं आईपीआर पर, जैसे कि अब मान के चलो किसी कंपनी ने गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने डीआरडीओ ने बहुत या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसने वैक्सीन बनाया, आप पार्टी लगा के नहीं कहेंगे कि वैक्सीन का फॉर्मूला बताओ, हमने क्या बनाया, ऐसा तो डीआरडीओ ने कुछ मिसाइल बनाया, आप ये नहीं कहेंगे कि बताओ कैसे बताया बनाया, हमने बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि कमर्शियल वैसा सीक्रेट है, एनी स्टेट हैज शेयर्ड विद, ठीक है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, स्टेट सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हिच इज गोइंग टू हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, बट if the sharing of this can serve a larger public interest then it can be shared, then it can be, जैसे मान लो generic medicines होते हैं, ठीक है, अगर government intervention is required it can be shared। then any information which is provided which has been received in confidence from the foreign government, जैसे मान के चलो कि इंडिया पाकिस्तान में रिश्ते ठीक नहीं है, वॉर बैटल हो रहा है, एंड देन इंडियन गवर्नमेंट को यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो तुम आरटीआई लगा के ये नहीं कहोगे कि हमें बता दो, हम खुद ही जाके खत्म करके आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो कॉन्फिडेंस में दिया हुआ है, दैट विल नॉट बी गिवन टू यू, दिस इज ऑब्वियस थिंग, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच मे एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनीबॉडी, ठीक है, कसाब को कहीं रखा गया, आप कहते हैं कि बहुत बदमाश हम जाके मारेंगे, उसको बताओ कहां रखा गया, ठीक है, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इंडिया इंदौर इंडियन एयरपोर्ट पे उतरे, उसके बाद उनको कहीं ले जाया गया जो कि सीक्रेट जगह था, तो आप नहीं कह सकते क्या तुम्हें पता था, इंडियन एयरपोर्ट पे उतरी थी, उसके बाद उनको कहीं सेफ जगह पे रखा गया हो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई इनका जो हमें पता, एनीथिंग व्हिच इंक्रीज द इंटरेस्ट, सो दीस आर द एक्सेप्शंस। प्रॉब्लम इज दैट इन्फॉर्मेशन को कैसे भी करके इसके अंदर फिट कर दिया जाता है, जैसे एक बार आगे डाला गया था कि सीएजी को कैसे अपॉइंट किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि हमें नहीं पता, ये पीएमओ से पूछो, पीएमओ से पूछा गया, पीएमओ ने कह दिया कि इसके अंदर कैटेगराइज कर दिया कि एग्जेम्प्टेड है, आपको आरटीआई के तहत इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए। in fact you must have heard about it, there's another section, I think section 11 of the RTA which talks about third party, okay, which talks about the third party section, third party means that the organization which is working for government but is not government, ठीक है। तो ये जो चल रहा था उस समय कोविड के टाइम में, what was the name of that particular प्रधानमंत्री, नो वेरी कल्याण, एक पर्टिकुलर फंड था ना जिसमें, हाँ पीएम केयर्स, तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया इसी ग्रुप में, आरटीआई वाज फाइंड कि पीएम केयर्स के बारे में कहां से कितना पैसा आ रहा है जानना है, तो फिर इट वाज सेड कि तो द थर्ड पार्टी, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड पार्टी एंड वी कैन नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन अंटिल अनलेस द थर्ड पार्टी अग्रीज टू दैट। सो अगेन द प्रॉब्लम इज इन द कैटेगराइजेशन इटसेल्फ। और जो एक लास्ट चेंज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द डेटा प्रोटेक्शन, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इनिशियली देयर वर टू कंडीशंस। इन प्रिंसिपल पर्सनल इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी गिवन, इफ लेट अस यू आर सेक्रेटरी, आपसे रिलेटेड कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, इट विल नॉट बी गिवन, but there were two conditions in which even the personal information has to be given in RTA. This first condition was that if that information cannot be disclosed from parliament or state legislature, then that information cannot be disclosed or cannot be kept hidden to US. Second is that if that information is in larger public interest, then even the personal information would be given. जैसे आप देखेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साइट पे भी जाएंगे, नेम वाइज जितने भी सर्विंग आईएफएस ऑफिसर हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, आई एम श्योर ये आईएएस लोग के लिए भी होता है, तो आप क्लियरली बैच वाइज देख सकते हैं। द मोमेंट यू एंटर इनटू द सर्विस, वहां पे एक पीडीएफ आ जाता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी कहां-कहां है, आपके नाम पे वो सारा वहां पे डिटेल आ जाता है। अगेन इट इज व्हाट, इट्स अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट येट दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ यू आर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अब आप इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं तो आपका कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पब्लिकली बताएं किसी प्लेटफॉर्म पे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी यू आर हैविंग, बट सिंस यू आर पब्लिक ऑफिशियल आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। Now here the two conditions were there. In principle, personal information shall be denied, but if that situation fulfills either of these conditions, then personal information भी देना पड़ता है। अभी क्या किया गया कि entire this thing has been replaced by this one line that any information which relate to personal information has been exempted from RTI। तो अब क्या होगा कि कोई भी relevant information है गवर्नमेंट उसको personal information में categorize कर सकती है और आपको वो deny किया जा सकता है। And other than that, you have other structural issue जो कि अभी एक बहुत important issue चल रहा है, that whether political parties should be entertaining RTI queries or not। क्योंकि जब RTI आए, then one of the institution called ADR, they put RTI to some of the national parties asking that kindly tell us the top 10 source of your income, कहां से आपके पास पैसा, top 10 source। None of the party replied to this। Then this matter was, यदि आपको reply नहीं मिलता है या फिर if you're not satisfied with the reply, then you will take to the respective या तो state information commissioner के पास या फिर central information commissioner। So the matter was taken to the central information commissioner, and central information commissioner also said that the political parties should give this information। Interestingly, जब ये सुनवाई हो रहा था किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद नहीं था, because political parties said that we are not public authorities, so why should we give the information, financial information। और जहां तक बात है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, आवर कैंडिडेट्स आर डिस्क्लोजिंग इन एफिडेविट, सिलेक्शन कमीशन को पता है, एंड वी आर डिस्क्लोजिंग इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास, बट देयर शुड नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर अस टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक अंडर आरटीआई, व्हाई, बिकॉज़ दे से इट विल बेनिफिट द पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स, उसका फायदा उठाने। नाउ यहां पे द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सेइंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर पब्लिक अथॉरिटीज। अब पब्लिक अथॉरिटीज का जो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं,
every political party, the national parties, they have been allotted land here in Delhi. Unko Doordarshan, unko Akashvani pe, they get that particular slot. They get tax benefit and other kind of benefits. That means they are indirectly benefiting from government and therefore they are public authority. Again, there's a difference. For example, if you talk about this institution, this cannot be called as the public institution because we are not benefiting. लेकिन मान के चलो कि there is any government project on which government is utilizing the services of this institution. Then on that project we are like third party. If you are asking for information, हमें या तो खुद से information देना पड़ेगा. But if you are denying it, then it will be decided by the public information officer. If he thinks वो larger interest में जरूरी है तो हमें वो information देना पड़ेगा. But otherwise, if I am not dependent on the government, then RTI से we are exempt. अब ये matter अभी भी it is lying in the Supreme Court that whether the political party should be considered as the public institution, public authority or. And there are other implementation issues जो कि एक आ जाता है कि pendency of the cases से लेके जो appeals होते हैं. ठीक है, you find that the maximum appeals are lying in Maharashtra, Karnataka, third पे है उत्तर प्रदेश, and fourth the Central Information Commission. fifth पे है छत्तीसगढ़. Surprisingly इसमें बिहार में है. ठीक है, बिहार में information मांगा नहीं जाता है, निकलवा लिया जाता है. RTI थोड़ी लगाता है, निकलवा लेंगे information, confidence होता है, निकलवा लेंगे. So these are the challenges that RTI से related है. ठीक है, बस challenges पे focus करते हैं इसको. Right. There are issues related to like right to information. Right to information is one of the most empowering legislations. One of the most empowering legislations. Under RTI Act 2005, which guarantees information in time-bound manner. In time-bound manner. The Supreme Court has recognized right to information, has recognized the right to information as a constitutional guarantee, under Article 19, Clause 1. Next one. RTI Act has been called the Sunshine Legislation. And the increasing applications shows the trust in RTI. Give us some challenges related to RTI. इसमें सबमिटिंग लिख दो structural challenges. इसमें point wise लिखेंगे. First point. Section 4 of the Act provides for suo motu disclosure by public authorities, but in the absence of a compliance mechanism. Sufficient information is not disclosed. Second, right? Section 8 of the RTI Act gives a long list of exemptions which has been liberally interpreted by the government departments to deny relevant information. इसी पॉइंट में लिखेंगे recently with Digital Personal Data Protection Act 2023, complete personal information has been exempted. Next point. Section 11 provides for the discretion of the third party in denying information until it is
in larger public interest. In larger public interest. एक और structural challenge लिखो. अब इसमें implementation में डालेंगे. Now implementation challenges. Implementation challenges. सतर्क नागरिक संगठन. सतर्क नागरिक संगठन. In its report, highlights the rising backlogs with state and central information commissions. For your understanding, in bracket write Maharashtra sequence में लिखो. Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Central Information Commission (CIC), Chhattisgarh. Next point, right? Amendments were made in 2019. ये अपील्स की बात हो रही है कि टाइम बाउंड मैनर में हमारे 30 दिन के अंदर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. अब वहां से दो केसेस हो सकते हैं. ठीक है, एक तो या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको मिले बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो उस केस में आप अपील में जा सकते हैं. स्टेट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे. यदि आप सेंट्रल के अथॉरिटी से रिलेटेड है तो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे. तो अपील्स की बात हो रही है, फर्स्ट इंस्टेंस की बात हो रही है. और कुछ एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, और वो फिर वही क्वेरी डालता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वही आंसर आता है और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएगा तो आपको तो आंसर दे ही दिया और आपका पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ. Amendments were done in 2019 that gave central government the power to determine the tenure and the service conditions of information commissioners. Next point. Although Section 12 of RTI mandates that persons of eminence from the field of law, science and technology, social service, management, journalism and administration shall be appointed as information commissioners. However, more than 80% are having bureaucratic background. जिसमें से 65% जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ही होते हैं. तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज क्रिएटेड. ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट लिखो. लास्ट पॉइंट एक सबहेडिंग ऐसे लिखो, पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई. Like parties have resisted. RTI queries. However, the Central Information Commission has declared political parties as public authorities under Section 2H, H small, under Section 2H, because they are substantially financed. The matter is before the Supreme Court. We'll see you next class. Thank you.